हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब एंड बेच कोस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में मार्च 2018 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पोज दिस वीडियो, ये वीडियो पोज करके पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है एक कंपनी की बुक्स में से। इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस: मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। यहाँ हम देख सकते हैं दो शॉप्स है, मशीन और असेंबली। हियर अमाउंट इज गिवन फॉर बोथ द शॉप फॉर डायरेक्ट लेबर, मगर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ ब्रैकेट में है हमारे पास, दैट इज labor hours for each shop. For machine hour 12,000 hours and assembly shop 10,000 hours. Okay, after that factory overheads are available for both the shops in rupee. Then administrative overhead, selling and distribution overhead are given. Okay, now what they are saying, to calculate following assuming that the company follows absorption costing. तो हमें ये कैलकुलेट करना है द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस यूजिंग द गिवन डेटा। यानी हमें ये जो पूरा डेटा दिया गया है उसके ऊपर से हमें ओवरहेड एक्सपेंस का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरिंग द ओवरहेड रेट कैलकुलेट द कोस्ट फॉर द फॉलोइंग जॉब। यानी हमें यहाँ एक जॉब की इंफॉर्मेशन दी गई है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कोस्ट ऑफ द गिवन जॉब। ओके, लेट अस सी। तो हियर डायरेक्ट मटेरियल फॉर द जॉब इज डिवाइडेड इन two different materials A and B. For A, 25 kilogram of material required and cost per kilogram is 16 rupees 80 paisa, and for B, 15 kilogram material is required and cost of it is rupees 20 per kilogram. Okay, for the job direct labor hours are available for both the shop, machine shop and assembly shop. ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर। Okay friends, let us start with calculation of rate of direct labor hour, because here direct labor total amount is given for each shop as well as total number of hours are given in the bracket. So on the basis of that we can calculate rate of direct labor hour. So first of all we are going to calculate for machine shop. The total labor amount for machine shop is 63,000. We will divide it by the number of hours of the machine shop, which are 12,000 hours. So we will receive the rate of direct labor hour, that is 5 rupees 25 paisa per hour for machine shop. Okay friends, same way we will calculate for assembly shop. For assembly shop the amount given here is 48,000 for direct labor, and we will divide it by 10,000 hours of assembly shop. So this way we will receive 4 rupees 80 paisa per direct labor hour rate for assembly shop. उसके बाद फ्रेंड्स हम रेट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड. We can put formula like this: factory overhead in amount divide by total hours of particular shops. So we'll start with machine shop first. तो machine shop के लिए factory overheads जो total है 88,200 divide by number of labor hours of machine shop which are 12,000. So 88,200 divided by 12,000 hours. So we'll receive rupees 7 rupees 35 paisa per hour rate for factory overhead for machine shop. Okay, for assembly shop the total factory overheads are 51,800 divide by 10,000 labor hours of assembly shop. So we will receive rupees 5 rupees 18 paisa per hour rate of factory overhead for assembly shop. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कोस्ट एज वेल एज प्रोडक्शन कोस्ट, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कोस्ट, selling and distribution overheads are based on production cost. For that purpose, so let us calculate. We will start first with
प्राइम कोस्ट। सबसे पहले हम प्राइम कोस्ट कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट प्राइम कोस्ट वी विल मेक एडिशन ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। So the total will get prime cost rupees 3,10,000। अब फैक्ट्री कोस्ट हमें चाहिए तो we will add factory overheads in the प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे 1,40,000। So we will receive factory cost that is 4,50,000। Okay, now we want production cost। टू गेट द प्रोडक्शन कोस्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे फैक्ट्री कोस्ट में which are 90,000। so 4,50,000 factory cost plus 90,000 administrative overhead, so we will receive production cost that is 5,40,000 rupees। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी हैव अ फैक्ट्री कोस्ट विथ अस, सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइड बाय फैक्ट्री कोस्ट मल्टीप्लाई विद 100 because we want answer in percentage। So administrative overhead in the question given are 90,000 and factory cost is 4,50,000 as we have calculated, multiply with 100, so we will receive answer that is 20%. It means we can say that the administrative overhead are 20% of factory cost। Okay friends, after that we will calculate rate of selling and distribution overhead। तो यहाँ क्वेश्चन में दोनों अलग से दिए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बट वी विल मेक टोटल ऑफ इट सेलिंग ओवरहेड plus distribution overhead divide by cost of production that we have calculated, multiply with 100। okay, so selling overhead are 81,000 rupees, distribution overhead are 62,100, divide it by cost of production that is 5,40,000 multiply with 100। तो इसे सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 26.50% रेट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर फ्रेंड्स, हमने दोनों का कंबाइन कैलकुलेट किया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। it means this percentage 26.50 shows that selling and distribution overhead are 26.50% of cost of production। okay friends, now we are going for the main answer that is estimation of cost for job order। तो जॉब के लिए हम cost estimation करेंगे total cost। तो first of all we start with the material। as per the question, information of material is like this, there are two type of material A and B। A material requirement is 25 kilogram at the rate of 16.80, so we will get total amount 420। same way material B 15 kilogram requirement rupees 20 per kg, so total 300, so we can say that the total amount of material is 720। okay, after that we are going for the labor cost। so here we will calculate for both the department। for machine shop total number of hours are required for this job are 30। now we have already calculated direct labor hour rate, okay, that is 5 rupees 25 paisa for machine shop, so 30 hours multiply with 5 rupees 25 paisa, so we will get 157.50। same way for assembly shop 42 hours are required for this job, and this labor hour rate for assembly shop is 4 rupees 80 paisa, so multiplication of both of these 201.60, so the total direct labor cost for this job is 359 rupee 10 paisa। now total of this direct material and direct labor we will label as prime cost, that is 1079 rupees and 10 paisa। okay friends, this cost sheet is continue। so we have received the prime cost 1,7900.10। okay, now moving further, now it's time to calculate factory cost। to calculate factory cost we will add factory overhead to prime cost। now factory overhead per hour rate we have calculated, that is
For machine shop it was 7 rupee 35 paisa. For assembly shop it was 5 rupee 18 paisa. Now we will multiply both these rate with number of hours required for both the shop for this job, which are 30 and 42 respectively. So here factory overhead we will receive, हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा फॉर मशीन शॉप 220 रुपी 50 पैसा and for assembly shop 217 rupees 56 paisa. So total amount of factory overhead is 438.6 paisa. So by adding these amount to prime cost we will receive factory cost. Factory cost here is 1517.16. Okay, now after that we are going for production cost. To calculate production cost we will add administration overhead to factory cost. Okay, so as we have calculated the rate of administration overhead which was 20% of factory cost. Now we already have factory cost, that is 1517.16. we will get 20% of it, that is 303.43. okay, so by adding these two we will receive cost of production or production cost, which is 1820.59. now we are going for the last overhead, that is selling and distribution overhead. We have combined this both. Now as we have calculated the rate of selling and distribution overhead, that was 26.50% of production cost. तो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन कोस्ट है दैट इज 1820.59. so 26.50% of it is 482.46. तो अब हम ये दोनों का टोटल करेंगे, देन वी विल रिसीव टोटल कोस्ट फॉर दिस जॉब. So we can say that the total cost for this proposed job order is 2303.05 paisa.